हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम लोग सीखेंगे कैसे एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं एंड हाउ टू मेक अ सर्वर एज अ डोमेन कंट्रोलर डीसी। सो पहले जान जाए डोमेन कंट्रोलर होता है। तो डोमेन कंट्रोलर कुछ नहीं होता, इट्स नथिंग बट जस्ट द एडी इंस्टॉल इन द सर्वर, then that's how we become as a domain controller. But for that we have to promote our server as the domain controller. ठीक है। सो एक्टिव डायरेक्टरी जो है कोई अलग से इंस्टॉल नहीं करना होता, इट्स ऑलरेडी इनबिल्ट फीचर इन द विंडोज सर्वर, उसको हमें इनेबल करना होता है। सो इसमें बहुत सारे ऑलरेडी फीचर्स होते हैं जो होते हैं हमारे पास, वी कैन से द इंस्टॉल या उसको इनेबल करना होता है। सो देखते हैं कैसे होता है। सो फर्स्ट वंस यू लॉग इन द सर्वर तो आपको ऐसा दिखेगा, और ये जो है आपका सर्विस मैनेजर डैशबोर्ड, वहाँ पे आपको आना है। दैन क्लिक ऑन द ऐड रोल एंड फीचर्स, so click on next, then role base or feature based installation, click on next, then again next. So here you can see the active directory domain control service, domain service, then add feature. Okay, then click next, then click next, nothing need to select here, then next, then select restart the description server automatically if required. Then after we click install, so now we're starting to install the active directory in our server. Okay, so you say installation configuration required, installation succeed in my server, so is click on close. So now active directory install हो चुका है, and we can see here a sign to promote this server as a domain controller. So यदि इंस्टॉल होने के बाद ये हमें एज अ प्रमोट करना है सर्वर को डोमेन कंट्रोलर। सो इसमें क्या है, we can see the three option: add a domain controller, add a new domain, add a new forest. So मेरे पास तो अभी कुछ है नहीं, मैं फ्रेश कर रहा हूँ, तो मैं एक फ्रेश के लिए अपने डोमेन का नाम दूंगा। सो डोमेन नेम लाइक कोई भी नाम, then .com you can use, xyz.com or anything. So I just keep a name as cyber.com as my wish. You can put your name according to requirement. So just click next. So here take little bit time, हाँ। So यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा। So type the directory service root mode DSRM password. So I give a one password which we have to keep a store in the system on your local machine, कहीं भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। So click on next. So wait some minute, it will verify the net BIS name, और यहाँ पे शो करेगा डोमेन नेम, लाइक मैंने दिया cyber.com, it will show the cyber.com नहीं करेगा। click next. Okay, so this is the locations, database folder location क्या है, log file location क्या है, आपका sysvol folder location क्या है। so then after click next, and then ये same description है, आप इसको कॉपी कर रख सकते हो, और you can click on next. so अभी प्री रिक्वेजिशन चेक कर रहा है, then is good। यहाँ पे कुछ मैसेज आते हैं, that's you can ignore.
and click on install. So installation in progress. Configuring DNS server on this computer. Okay, now it's completed. Then it will ask me to log out. Let's say close. It will be restart now. Let's wait a moment. Yep, yes, it will restart automatically. So अब जब restart करेंगे, so how can we know or we can verify कि this server is become a domain control now. So just wait. So we can see system is restart. Just click try to log in. So login करने से पहले आप देख लो before install the AD or make a server as a domain controller, आपको यहाँ पे जब यूज़र आईडी होगा ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर आता होगा, ये नहीं आता होगा, ये मेरा डोमेन का है. जब ये डोमेन बन गया तो ये डोमेन नेम स्लैश उसका अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट ये आएगा. सो नाउ ये कर सकते हैं कि हमारा अकाउंट हम लॉगिन कर रहे हैं थ्रू डोमेन के एडमिन यूज़र से. पहले लोकल कैट भी था, ये डोमेन एडमिन हो गया. और आप यहाँ से देख सकते हो एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर. ये आपका रहा cyber.com. ये मैंने जो बनाया था ये मेरे OUs हो गए, ये मेरे यूज़र्स हो गए. आपने कोडिंग और जो फॉरेस्ट डालना है डाल सकते हो, ऐड करना कर सकते हो. सो दिस इज द प्रोसीजर टू इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी एंड मेक अ सर्वर एज अ डोमेन कंट्रोलर. So thank you to watch my video. If you need anything, so just comment and subscribe this channel and like the video. Thank you. Bye. See you later.